Hello everyone, welcome to my channel, and today we will be talking about the topic squint. So this is a difficult topic, but let's hope I will make you understand it better. So first of all, you have to know that what is visual axis. So visual axis is a imaginary line. It is an imaginary line that passes from the center of the pupil to the center of the fovea. And you can see in the both eye, let's suppose this is the right eye, this is the left eye. So in the both eye, in the right and the left, a imaginary line passes from the center of the pupil to the center of the fovea, and normally these two pair lines in the both eyes should be parallel. So if the both eyes are having the visual axis, and if they are parallel to each other, then in those eye we will call it those eye are orthophoric. Ortho means straight. So true orthophoric will never be found in the earth. So the true orthophoric person are not usually found. Everyone has a little amount of the squint or strabismus. No one has a 100% parallel visual axis, but clinically you can see the person as a orthophoric, but in real case there is no any person who is having total 100% orthophoric eye. Now let's suppose that if any eye is having a misalignment of the visual axis, let's suppose this visual axis has misaligned or this visual axis has misaligned. So ultimately, if the visual axis will change its plane, then what will happen? There will be the misalignment of visual axis. There will be misalignment of visual axis of two eye. Normally the two eye, the visual axis alignment of the two eye should match or should be somehow parallel. But if they are misaligned, or if let's suppose the one is like this and the another in another eye like this, or one is normal but in another eye there will be the alignment like this, then there will be misalignment of the two visual axis of the eye, and in that condition there will be the squint evident in the person. So the misalignment of the visual axis of the two eye is known as squint. So it is a definition. So you have to memorize it. Now let's talk about the classification of squint. So basically there are two types of squint. One of the squint is basically the latent squint. So one of the squint is latent squint, and another squint is known as manifest squint. Manifest squint. The latent squint are also known as phoreas. The latent squint are also known as phoreas, and the manifest squint are also known as tropias. The phoreas are also known as heterophorias. The phoreas are also known as heterophorias, and similarly the tropias are also known as heterotropias. Heterotropias. Now we will talk about it in detail. So let's talk about latent squint first. So let's talk about the latent squint. So latent squint is basically a condition where there is actually the presence of squint, but the squint will be kept latent by the faculty of fusion. For example, let's suppose if any person is having a squint, but normally if you see that person, you will not find the squint in that person. But yes, in actually that person has a squint. But if you look that person, that you will not find a squint. Why you will not actually find the squint in that person? As the faculty of fusion. Faculty of fusion is a faculty, or we can say an area in the brain. So this faculty of fusion is simply an area in the brain, and this area in the brain, what they will do? They will actually fuse the difference between the two eye. So let's suppose this is the one eye and this is the one eye, and let's suppose that there is a visual axis like this, and let's suppose in this side there is a slight visual deviation in let's suppose left eye, and if the difference is not so much obvious, let's suppose the difference between the two eye is somehow 5 to 10% in maximum, then what will happen then? The brain will perceive the image from the both eye, and the difference that is present between the two eye will be actually fused, and you will not find the brain will actually keep the both eye in the in normal direction. So the brain has actually the faculty of fusion,
and due to the due to the faculty of fusion, the eye is the deviation will not be evident. So the deviation is kept latent, and that is by the brain. So if the brain is keeping the deviation as the latent, in that condition you will not find squint, and that type of squint where the squint is present but you will not find squint is known as latent squint. So a latent squint person, whenever comes to you, then you will not find a squint just by looking the person. You have to do a certain test, then only you can say that the squint is present or not. Now let's talk about the types of this latent squint. So latent squint is also known as, I have told you, phorias or the heterophoria. And heterophorias are 5 types: the esophoria, exophoria, hyperphoria, hypophoria, and cyclophoria. So let's talk about the esophoria. Now esophoria means the tendency of the eyeball to deviate inward. It means that there is a tendency or there is a squint in which the eyeball is deviated inward. So what is the reason behind it? The reason behind it is 2 types. One type, convergence excess type. It means that there is an overactivity of the convergence muscle. So those muscles which will actually converge the eye, they are now overacting, or they are now doing overwork. So we can say there is overactivity of convergence muscle. And in these cases, when you see, normally whenever you actually see any near objects, normally also your eye converges, but in this person the eye will converge more than the normal person, as there will be the overactivity of the convergence muscle. So convergence will be, we can say that the convergence will be greater in comparison to normal person, on fixating near objects. So normally also, if you see any near object, in the normal person also there will be convergence, but there will be not so much convergence. But in this person, in the esophoric person, or we can say then in the convergence excess type person, there will be overactivity of the convergence muscle, and due to which the convergence will be greater in comparison to the normal person on fixating any near objects. The second cause of the esophoria can be the divergence weakness type. It means that your convergence muscle is okay, but whatever the divergence muscle present in your eye, that is weak now. So the divergence power is weak. So it is very obvious that if the divergence muscle is weak, the convergence muscle will do more work. So simply there will be underactivity of divergence muscle, and if there will be underactivity of divergence muscle, the convergence muscle will only act, and that's why there will be inward deviation of the eye. And so normally what happens when you see any distant object in normal person also, if you see any distant object, your eye will diverge, as on seeing the near object, the eye will actually converge. Similarly, on watching the distant object, the eye will diverge. But in this person, as the divergence muscle are not strong enough to diverge the eye, that's why on watching the distant object also, you will see that the eye are actually converging. So convergence will be greater on fixating distant object. But in normal person, what will happen? In normal person, convergence will be less on fixating the distant object. But in this person, as there is a divergence muscle weakness, that's why there will be no divergence, or we can say very less divergence, and that's why overall there will be convergence will be present on fixating the distant object also. Now we have exophoria. So in exophoria, it is just opposite of the esophoria, and esophoria, as we have said, that if it is a tendency of the eyeball to deviate inward. So similarly in esophoria, the person are usually those person where the tendency of eyeball is to deviate outwards. So the tendency of eyeball to deviate outward, and the similar phenomenon occur here as like the esophoria, just opposite.
So there will be convergence. In the esophoria, there will be convergence stronger, but here there will be weakness of the convergence. So convergence weakness type. Weakness type. And in similar fashion, there will be divergence overactivity. So if there will be weakness of the convergence muscle, then it is very obvious that your eye will not actually converge more. Your eye will diverge more. And if there will be divergence overactivity, then it is very obvious that your eye will diverge. So this is the phenomenon that occur in esophoria. Now see the hyperphoria. Hyperphoria means the tendency of the eyeball to deviate upward. So tendency of eyeball to deviate upward, and similarly the hypo means just opposite that. Hypophoria means simply the tendency of an eyeball to deviate downward. And if the tendency of the eyeball will be to rotate in the anterior-posterior axis, then it is known as cyclophoria. The cyclophoria means tendency of eyeball to deviate in anterior-posterior axis. But yes, the most importance are actually the esophoria and the exophoria. So remember especially esophoria and exophoria, and for just a knowledge you have to remember this also. But must know this, and these are the good to know things. So let's talk about the etiology of the phorias. So basically there are two main etiologies. They are anatomical factors and there are some physiological factors. Now let's talk about first of all anatomical factors. So let us suppose that the size of the orbit is not symmetrical in the both eye. Let's suppose the size of the orbit is not symmetrical in both eye. So in these eye, the development of in this let's suppose this is a normal size and let's suppose this is a smaller orbit. So the development of the eyeball in this orbit and development of the eyeball in this orbit will be different as the size of the orbit is different. So if there will be orbital asymmetry, then there can be the underdeveloped one eye and or we can say the good development of the other eye. So in these cases also there can be the squint, as the one eye is small, one eye is bigger. So there can be the visual axis alteration and there can be the squint. Another cause can be, let's suppose that there is a faulty insertion of the extraocular muscle. The extraocular muscle is inserted in faulty manner. What does it mean? It simply means that let us suppose this is eyeball and let's suppose that here there should be the attachment of the medial rectus muscle. Let's suppose here normally here the medial rectus should attach, but let's suppose if due to any reason if the medial rectus has attached in this side, then we will call it that as that there is a faulty insertion. So if due to any genetic causes, if there will be faulty insertion of the extraocular muscle, then also there will be the deviation of the eye. The third cause can be the anomalous central distribution of nerves to convergence and divergence muscle. So what does it mean? It simply means that from the brain actually the knobs will come and the knobs are innervating the convergence muscle and divergence muscle. So the convergence, whatever the knobs that are for convergence should actually come in the convergence muscle, and what are the knobs for the divergence should come at the divergence muscle. But let's suppose if due to any problem, the convergence knob will actually go into the divergent muscle and the divergent knob will go into the convergence muscle. So in that case, if the distribution of the knobs are actually there is a dearranged distribution, then there can be the squint.
Now let's suppose this is a eye, one eye, and this is another eye. Let's suppose the position of the macula in this eye and this eye are totally altered. Let's suppose in the normally the position should be here and here, in the position of macula. But let's suppose one eye has a macula here and another eye has a macula here. So if there will be the position of macula altered, then the visual axis will get altered. So if there is a anatomical variation in position of macula, if there is a anatomical variation in the position of macula, we said that if the actually the visual axis or the optical axis are actually the line passing through the center of the pupil to the macula or the fovea. But if there is a macula position alteration between the two eye, the visual axis will not get matched, and there again there will be the squint. So those were the anatomical factors. Let's talk about the physiological factors. So the first factor is simply the age. So as the age actually usually in the young person, there will be the esophoria, and in the elderly person, there will be the exophoria. So usually in the young or the children, actually the development of the nerves and the extraocular muscle training has not been properly trained in the young age, very young age, and due to which they are esophoric. And in the elderly, there will be the weakness of some muscle, and that's why there can be exophoria. Now there is a second thing, role of accommodation. So let us suppose that if there is increased accommodation, so let us suppose there are some person who are actually doing very near work and hypermetrops. So if their person is hypermetrop, then the person can easily see the distant object and cannot see the nearby object. So he is always using his more accommodative power to see any near objects. Or any person who is doing any near work, like the tailor, those person who works in the tailor to actually put the thread in the needle. So in those person and who are doing the fine works, the near works, in that person the accommodative power are used more. And whenever you use the more of your accommodative power for a long time, in that case there can be the on doing near work, always there will be the overactivity of the convergence muscle. I have already said you there will be overactivity of convergence muscle. And if there will be overactivity of the convergence muscle, there will be the esophoria. So that's why in the hypermetrops and in the person doing near work, there will be esophoria. And just opposite, if any person is doing distant work, or so in the drivers, so drivers are always looking for the distant object, or in the myopia. So in the myopia, what happens? A person can see the nearby but cannot see the distant object. And if he is not wearing any glasses, then in the myopic person or in the myopic person, what happen that the person will actually do not use these more power to see the distant object, and in that case there will be decreased accommodation. And on watching the distant object, he will use his the divergent muscle in more he will use more to his divergence muscle. So the overactivity of the divergence muscle will lead to his exophoria. So exophoria is basically due to overactivity of the divergence muscle to see the distant object. Similarly, in the presbyopia. So presbyopia is a condition where the eyeball has a certain where there will be difficulty in watching the near objects and difficulty in watching the distant object. But in this person, usually the exophoria will develop. Why the exophoria will develop? Simply it is due to the decreased use of convergence muscle. So there will be decreased use of convergence muscle, and if there is a decreased use of convergence muscle, the convergence muscle can underget weakness, and due to the weakness of the convergence muscle, there can be the overactivity of the divergence muscle, and there can be the exophoria. Similarly, there are some dissociation factor. So if you are
prolonged constant use of one eye. So if there is a prolonged constant use of one eye, let's suppose in the watchmaker, in the lab technician, to the pathologist. So usually those who work in the microscopes, they are constantly using one eye more. So in that cases, there can be the exophoria. So why there will be exophoria? So simply there is only one use of one eye and another eye is just resting. As if you are using any microscope, then you will look from the one eye, but you will close the another eye. So due to the difference of the image pattern in the both eye, there will be the dissociation factor will come. And if there will be dissociation factor, I mean that the images from the both eye will not match in the brain, and in that condition there can be the presence of the exophoria. Now let's talk about the symptom that the latent squint person will suffer. So the symptom are three types, basically compensated latent squint, decompensated latent squint, So there are basically two type of person where the latent squint will be compensated and where the latent squint will not be compensated, so decompensated. So let's see what there will be symptoms in the compensated latent squint. So let us suppose that simply the definition says that there will be the squint, but the squint will not be evident. It will be kept latent by the faculty of fusion in the brain. It means that due to actually the align the misaligned eyes, there is a requirement of the neuromuscular power. So there will be a reserve neuromuscular power, and this reserve neuromuscular power will help the eyes to kept latent. So this neuromuscular power will actually keeping the latent to the squint. So that is why in this person there will be no symptoms at all. But yes, the latency is due to basically the reserve neuromuscular power. So it is also reserve neuromuscular power also depend on the individual desire. So let us suppose let's suppose that I am focused. I want that my eye should look good. So in that case, there will be the compensated latent squint. But let's suppose that I have worked more. I have worked 13 to 14 hours a day, and now I am totally exhausted. So I am not focusing to keep my eyes in the latent position. And let's suppose that I have just left thinking about my eye. In that case, the brain will not actually fuse, and in that case there will be the decompensated latent squint. So decompensated latent squint. So this will be present in those person where the muscles now get fatigued and there is a decreased or the reserve neuromuscular power has exhausted. So let's suppose I have worked more than 12 hours, more than 8 hours in a day. Then I am totally exhausted now. Then my reserve neuromuscular power is also exhausted. And if the reserve neuromuscular power has exhausted, and now I just want to sleep, but I am not able to sleep in this condition, my brain is not working to actually keep the squint to latent, and in that cases the latent will get manifest. In that case, the latent will be manifested. It means now if you will see that person, there will be the evident squint. Okay, so basically in this condition there will be also symptoms of the muscle fatigue. And if the muscles are fatigued, the symptom will be like there will be eye ache, there will be headache. So there can be the eye ache, there can be the headache, and there will be the difficulty in changing the focus, and there will be the photophobia. So there will be the photophobia.
and difficulty in changing the focus. So if you are watching at any particular object, so it will be difficult for you to change the focus from that point to another point. So these are the symptoms of decompensated lateral squint, that if you are very fresh, if you are very active, then there will be no any symptom. If you are so much exhausted, you have worked more than 8 hours a day, then your muscle of the eye will also get exhausted. There will be lack of the reserve neuromuscular power, and in that case, there's the eyes will not remain now latent. The latent will get actually manifest. Manifest means the squint will get evident, and there will be the symptoms of muscle fatigue like the eye ache, headache, and there can be the photophobia and difficulty to changing the focus. कवर टेस्ट, उसमें क्या होता है, डिटेक्ट्स मैनिफेस्ट स्क्विंट. जो पहला टेस्ट होता है कवर टेस्ट, वो स्क्विंट डिटेक्ट करता है जो मैनिफेस्ट है, दैट मींस ट्रोपिया. उसमें क्या करते हैं, हम एक आंख को बंद कर लेते हैं, एक पेशेंट को बोलते हैं टॉर्च को देखें, और टॉर्च आपके फोरहेड पे आ रहा है लाइट, और हम पेशेंट की एक आंख बंद कर देते हैं और उसको बोलते हैं लाइट में देखो. तो सपोज मैंने एक आंख बंद किया, तो हम देखेंगे दूसरी आंख. देखिए, दैट इज द टेस्ट. इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चंस. आपको दो चीज समझनी. पहला तो ये करते क्यों है, क्योंकि ये ट्रोपिया या मैनिफेस्ट स्क्विंट डिटेक्ट करता है. दूसरा, करते कैसे हैं, करते हैं ऐसे कि हम टॉर्च को सेंटर पे लगाते हैं फोरहेड पे, और पेशेंट की एक आंख बंद करते हैं और दूसरी आंख देखते हैं. देखिए, वन आई कवर किया हमने, और वॉच फॉर मूवमेंट इन द अनकवर्ड आई. सो देखिए, अगर ये एग्जामिनर है, हमने इस आंख को बंद किया और देखते ये आंख मूव कर रही कि नहीं. अगर ये आंख मूव नहीं कर रही, वैसे कि वैसी है, टॉर्च ऐसे दिख रहा है, अगर ये कवर किया तो लाइट इनको दिख रही है, आंख मूव नहीं करेगी. अगर कोई मूवमेंट नहीं, आंख मूव नहीं कर, वैसे कि वैसी है, तो उनको कोई स्क्विंट नहीं. लेकिन अगर आंख मूव करती है, तो इसका मतलब उनको स्क्विंट है, जो ट्रोपिया होता है. देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास ये एक नॉर्मल आई है, ये सेंटर है, देख रहे हैं, मैंने इसको बंद किया, टॉर्च ऐसे रखा, और मैंने टॉर्च को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, और पेशेंट को बोला कि आप मेरी टॉर्च दो. मैंने इसको कवर किया, तो पेशेंट को टॉर्च दिख रहा है दूसरी आंख से, तो आंख नहीं मूव करेगा, इसलिए आंख मूव नहीं करेगा. चाहे मैं इसको कवर करूं तो ये मूव नहीं करेगा, इसको कवर करूं तो ये मूव नहीं करेगा. इसका मतलब कोई स्क्विंट नहीं है. लेकिन सपोज दूसरी आंख देखिए, दूसरा जो पिक्चर है उसमें सपोज उसको एक्सोट्रोपिया है. मान लीजिए एक्सोट्रोपिया मतलब आपको दिख रहा है कि बाहर आंख है. तो अब देखिए, जब मैं टॉर्च रखता हूं सेंटर पे, तो यहां पे तो लाइट दिख रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ है. देखिए, मैंने जैसे इसको कवर किया, पेशेंट को बोला गया आप लाइट को देखो, जैसे इसको कवर किया तो उसकी आंख बाहर अंदर की तरफ जाएगी लाइट को देखने के लिए. उसकी आंख इस तरफ मूव कर जाएगी, फ्रॉम आउट टू इन. तो जैसे मैंने ये आंख बंद करी, मुझे दिखेगा कि इसकी आंख अंदर को आ रही है, इसका मतलब मुझे मूवमेंट दिख रहा है, इसमें स्क्विंट है. ओके. सिमिलरली मैंने इसको भी बंद किया, तो ये आंख भी अंदर की तरफ आएगी, स्क्विंट है. तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि हम कवर टेस्ट करते कैसे हैं. एक आंख को बंद करते हैं वन बाय वन, पहले एक आंख, दूसरी आंख, और दूसरी आंख में देखते हैं. तो एक आंख को बंद किया और ऑपोजिट आई में मूवमेंट देखा. अगर मूवमेंट है तो स्क्विंट है, अगर नहीं है तो कोई स्क्विंट नहीं है, और वो स्क्विंट ये मैनिफेस्ट स्क्विंट है. ठीक है, ये हुआ आपका कवर टेस्ट. में बहुत फर्क है, और ये डिटेक्ट करता है लेटेंट स्क्विंट. देखिए, इसका क्वेश्चन मैनिफेस्ट था ट्रोपिया, और ये लेटेंट है व्हिच इज फोरिया, दैट मींस लेटेंट को डिटेक्ट करता है. पर इसे करने का तरीका भी दूसरा है. देखिए, इसमें कवर करते हैं हम एक आंख को, वैसे ही लाइट हमने रखा और डायरेक्ट किया फोरहेड पे, और पेशेंट को बोला लाइट को देखिए, और एक आंख बंद किया. एक आंख बंद किया, लेकिन कवर में हम दूसरी आंख को देखते थे. कवर टेस्ट में एक आंख बंद करके ऑपोजिट आई को देखते थे, लेकिन कवर अनकवर में आप कवर करो अनकवर करो, कवर किया अनकवर किया, और उसी आंख को देखा. ओके. सो कवर टेस्ट में एक आंख कवर की, दूसरी आंख को देखा है. कवर अनकवर में जिसको कवर किया उसको अनकवर किया, और उसी आंख को देखा गया है. इसको दिस इज हाउ इट इज डन. देखिए, वन आई को कवर किया और फिर अनकवर, कवर अनकवर, कवर अनकवर, और वॉच फॉर मूवमेंट इन द प्रीवियसली कवर. जिस आंख को हमने अनकवर किया उस आंख में देखिए मूव कर रही है कि नहीं. ओके. सो देखिए, सिमिलरली इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सपोज ये हमने एक आंख बंद की, दूसरी आंख को देखा, ये हमारा कवर. लेकिन सपोज मैंने इस आंख को कवर किया और अनकवर किया, कवर अनकवर, कवर अनकवर, और देखिए मुझे मूवमेंट देखने इस आंख की, इस आंख की, उसी आंख में जिसको कवर किया गया. तो अगर ये आंख मूव करती है तो इसमें
लेटेंट स्क्विंट है या फोरिया है। और अगर मूवमेंट किस तरह से, अगर आंख बाहर से अंदर की तरफ आती है तो एक्सोफोरिया हुआ, और अंदर से बाहर की तरफ आती है तो इजोफोरिया हुआ। ये कवर अनकवर टेस्ट है जिसमें आपको फोरिया का पता चल रहा है और उसी आंख में देखना है जिसको आपने कवर किया था। ये बहुत ही पावरफुल टेस्ट है, जानना जरूरी है। देखिए इसमें हम कवर अनकवर कर रहे हैं, इस टेस्ट को देखिए, हम कवर कर रहे हैं इस आंख को और इसी को अनकवर करते हैं। सपोज मैंने इसको कवर किया, पेशेंट को बोला आप टॉर्च को देखें, कवर अनकवर, कवर अनकवर, कवर अनकवर, और इसी आंख की मूवमेंट देखनी है कि मूव कर रही है कि नहीं। तो ये हमको बताएगा किस तरह से, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह है। देखिए कि सपोजिंग वी हैव अ स्क्विंट लाइक दिस, सपोजिंग हमारे पास एक स्क्विंट इस तरह का है, पेशेंट को फोरिया है। देखिए फोरिया मतलब सेंटर्ड है, आपको दिख नहीं रहा है कि सपोज मेरे को एक्सोफोरिया है। आप मेरी तरफ देखें, एक्सोफोरिया मतलब मेरी आंख बाहर की तरफ है, लेकिन फोरिया है तो दिखेगा नहीं, तो आपको आंख तो सेंटर्ड होगी क्योंकि दोनों आंख कंट्रोल कर रही है, बाइनोकुलर बैलेंस चल रहा है, इसलिए सेंटर्ड होगी। तो आपने टॉर्च ऐसे रखा और फोरहेड पर रखा और पेशेंट की आंख इस पे कवर किया। देखिए सपोज मैं इस आंख को कवर करता हूं और इसमें अभी तो जब मैंने नॉर्मल दोनों टॉर्च को, जब मैंने टॉर्च को रखा इधर और उसको पेशेंट को बोला देखने के लिए, तो बिल्कुल सेंटर में है, रिफ्लेक्शन दोनों सेंटर में दिखेगी क्योंकि अब ये दोनों कंट्रोल में है, ये बिल्कुल पैरेलल है। लेकिन एक्चुअली तो है एक्सोफोरिया। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही मैंने इस आंख को कवर किया अब ये आंख रेस्ट कर रही है, क्यों कवर दिख नहीं रहा है तो रेस्ट कर रही है। और याद रखिए रेस्टिंग पोजीशन जो आंख की होती है वो हमेशा नॉर्मल पोजीशन पे जाती है। जो रेस्टिंग आंख होती है वो हमेशा अपनी नॉर्मल पोजीशन जाती है। और नॉर्मल पोजीशन क्या है, नॉर्मल तो एक्सो है ना, तो बिहाइंड द कवर देखिए, कवर के पीछे आंख बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट को एक्सोफोरिया था, एक्सो था और आंख बाहर चली गई, बाहर चली गई, लेकिन आपको तो नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने कवर किया हुआ है, इसलिए आपने अनकवर किया। जैसे ही आपने अनकवर किया, पेशेंट को बोला गया है कि आप लाइट में देखो, तो जो आंख बाहर चली गई थी वो आंख अंदर आ जाती है टॉर्च को देखने के लिए। तो आप क्या देखते हैं जब आप आंख को अनकवर करते हैं, जो आंख बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है, वो बाहर कैसे गई, क्योंकि उसको एक्सोफोरिया था। सो दैट इज हाउ द एग्जामिनर नोज कि पेशेंट को एक्सोफोरिया था, क्योंकि वो बाहर कैसे चली गई, क्योंकि एक्सो था। सिमिलरली मान ली पेशेंट को इजोफोरिया, इजोफोरिया मतलब एक आंख अंदर है लेकिन फोरिया है, इसे दिख नहीं रहा है ना। तो आपने जब टॉर्च रखा तो बिल्कुल सेंटर में है, फिर आपने कवर किया, जैसे कवर किया पेशेंट की आंख रेस्ट कर रही है, रेस्टिंग आंख हमेशा नॉर्मल पोजीशन में जाती है और नॉर्मल है इजोफोरिया, इजो मतलब अंदर की तरफ, तो आंख अंदर चली गई, लेकिन आपको तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो जैसे आपने अनकवर किया, जैसे आपने अनकवर किया, पेशेंट को बोला गया है कि लाइट को देखा जाए, तो जहां जो आंख अंदर आ गई थी वो घूम के बाहर आ जाती है ताकि लाइट को देखे। तो आप क्या देखते हैं, जब आप आंख इसको अनकवर करते हैं तो आंख अंदर से बाहर की तरफ आती है। वो अंदर कैसे गई, क्योंकि इनको इजोफोरिया था। सो दैट इज द इंटरप्रेट। प्लीज रिमेंबर कि जिस प्रकार से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि हम टॉर्च को रखते हैं ऐसे और कवर करते हैं और अनकवर करते हैं और उसी आंख को देखते हैं और मूवमेंट देखते हैं। अगर आंख बाहर से अंदर की तरफ तो एक्सोफोरिया था, अगर आंख अंदर से बाहर की तरफ है तो इजोफोरिया था, और अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो ऑर्थोफोरिया था। ओके, तो ऑर्थो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और इसको हम बोलते हैं कवर अनकवर टेस्ट। देखिए इसमें आपको दिखाया जा रहा है कवर अनकवर, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ऑक्लूडर है, ये ओपेक है, लाइट में दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सी ट्रांसलूसेंट ऑक्लूडर दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि उसके नीचे से एक्चुअली आंख में क्या हो रहा है। गौर कीजिएगा नेक्स्ट पिक्चर पे। देखिए पहला पिक्चर फोटो देखिए, बिल्कुल सेंटर्ड में है, आपको दिख रहा है रिफ्लेक्शन और आपको दिख रहा है आंख बिल्कुल पैरेलल है। आप सोचेंगे ऑर्थोफोरिया है, तो हमने कवर अनकवर किया। देखिए जैसे ही मैंने कवर किया, देखिए क्या हो रहा है, ये ट्रांसलूसेंट है, देखिए आंख अंदर चली गई, आपको दिख रहा है। आंख अंदर क्यों चलेगी, आंख अंदर इसलिए चलेगी क्योंकि इजोफोरिया, इजोफोरिया है, यहाँ कंट्रोल किया हुआ है बाइनोकुलर बैलेंस ने, लेकिन जैसे ही आपने ये रखा ऑक्लूडर, आंख रेस्टिंग पोजीशन में चली गई, रेस्टिंग में नॉर्मल पोजीशन इजो था, आंख अंदर चली गई। देखिए ये दिख रहा है। जब मैं इसको हटाऊंगा ऑक्लूडर तो आंख बाहर आ जाएगी टू टेक अ फिक्सेशन। दैट विल टेल मी कि इसको इजो है, क्योंकि आंख अंदर से बाहर आ रही है, जिसको हमने अभी इंटरप्रेट किया कि इजोफोरिया था। और इसमें दिख रहा है। और सिमिलरली दूसरी आंख को भी बंद कर देखिए, दूसरी आंख को भी बंद किया तो अगेन आंख अंदर आ गई, आपको दिख रहा है। क्यों अंदर आ गए, क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन में आंख हमेशा नॉर्मल पोजीशन में जाती है, इसमें इजो था, ये भी इजो हो गई। और जब मैं इसको हटाऊंगा तो आंख घूम के बाहर आ जाएगी टू टेक अ पोजीशन, और तब मुझे दिखेगा कि अंदर से बाहर आ रहा है,
अंदर कैसे गया ईजोफोरिया था। देखिए दोनों में ईजो दिख रहा है, दैट इज वाई आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि फोरिया जब हम बोलते हैं जो लेटेंट स्क्विंट्स होते हैं उसमें राइट या लेफ्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसमें राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, तो हम सिर्फ ईजोफोरिया या एक्सोफोरिया या हाइपरफोरिया बोलते हैं, हम लोग राइट या लेफ्ट नहीं बोलते हैं, बिकॉज दोनों आंखों में डिस्ट्रीब्यूट होता है स्क्विंट। ओके, तो इसको हम बोलेंगे शी विल हैव ईजोफोरिया। ओके, ये नहीं बोलेंगे कि राइट है या लेफ्ट है। और लेकिन देखिए सेंटर में तो बिल्कुल सेंटर है। सो दिस इज द पावर ऑफ द कवर अनकवर टेस्ट कि आप